So hello everyone. So in this video we will discuss the steady state behavior of capacitor, that why it is open circuit the steady state when it is connected with a DC supply, just as I have discussed the in my last video that the steady state behavior of inductor and why it is short circuited at the steady state. Okay. So first of all, again I am considering a basic RC network here. So this is a basic RC network and we have provided this DC input here, right? And the voltage across the capacitor is VCD, and the current across this capacitor, this network will be the capacitor current into ICD. This is the DC input we have provided. So again, the first phase, that is the charging of the capacitor, because we have provided the DC input. So when the capacitor is charging, so इसके जो capacitor का जो voltage होगा VCD वो एक increasing function होगा, right? Because यहाँ पर capacitor charge कर रहे हैं and we have first, and why it is charging, because we have provided the DC input, right? अब initially let's say कि ये discharge था, so VC0 minus initially we have considered to be 0 1. So जो कैपेसिटर का वोल्टेज का ट्रांजिएंट इक्वेशन है that is VCT is equals to VC infinite plus of VC0 plus minus of VC infinite and exponential raised to power minus of t upon tau. This equation is valid for the time instant greater than equal to 0 second. So VC0 minus, we know that the property of capacitor, that capacitor always holds the voltage. So VC0 minus is equals to VC0 plus, that is equals to 0. So capacitor voltage equation will be VC infinite and 1 minus e raised to power minus of t upon tau. This is the standard चार्जिंग इक्वेशन, राइट. सो इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब इस तरह से कुछ इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से इक्वेशन है, राइट. यहाँ पर जाके VC इनफाइनाइट पे रीच कर जाएगा, so that's why it is an increasing function. Okay. Now कैपेसिटर जो करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन है that is ICT, that is equals to C dVCD dt, right. So derivative of this VCT which is an increasing function, एक increasing function का derivative हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, राइट. बिकॉज कोई भी अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है लाइक दिस, तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव जो होगा, मतलब जो उसका स्लोप होगा इस रीजन में, जो उसका स्लोप होगा ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा. तो इसलिए जब इंडक्टर चार्ज कर रहा हो, सॉरी कैपेसिटर जब चार्ज करता है तो उसका जो करंट है, करंट उसके अक्रॉस जो करंट है वो हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है एंड उसका जो वोल्टेज है VCD ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है. सो डिस्कशन विल बी टोटली बेस्ड ऑन द, मतलब सेम डिस्कशन we have discussed for the inductor, right. So same ही concept है, because अब यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैपेसिटर जो है वो चार्ज कर रहा है. सो we will draw this transient equation graph. तो simply यहाँ पर इस तरह से it is charging and it will reach to its maximum value, that is the VC infinite at time tending to infinite. This is VC infinite, which is the maximum value of the capacitor voltage, right. This is the maximum value, and following the equation it was VC infinite and 1 minus of e raised to power minus of t upon tau. It is an increasing function. Now at t tending to infinite, which is the present steady state, right. So it has reached to its maximum value, present steady state. So VC at infinite has reached to its maximum value. Now the capacitor current is IC at t tending to infinite, which will be C d by dt of VC infinite, and VC infinite is having the maximum value, और maximum value किसी भी फंक्शन का हमेशा एक constant value होता है, right, which can't vary. हमेशा एक constant value होगा, fixed value होगा जो vary नहीं करता है, और एक constant value, the derivative is always 0. So एक कैपेसिटर का करंट 0 एम्पेयर है, इस रीजन की वजह से ही कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किटेड है. किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट 0 है, दैट मींस इट इज ओपन सर्किटेड. सो दिस इज द रीजन व्हाई द कैपेसिटर इज treated as an open circuit in steady state, because on the steady state, if the capacitor is in the charging fashion, so the voltage of the capacitor will reach to its maximum value at the steady state, and the relation between the capacitor and capacitor voltage is simply IC is equals to C dVC by dt. And because the capacitor voltage has reached to its maximum value, so the derivative of the maximum value, which is
always a constant fixed value is 0. That's why the capacitor is behaving as an open circuit because IC final is 0. Right? So ये basically reason है. तो I hope it is clear. एंड यहाँ पर ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है ये हमेशा ही कंटिन्यूस वेवफॉर्म होता है. जैसे इंडक्टर में करंट वेवफॉर्म एक कंटिन्यूस वेवफॉर्म होता है, वैसे ही वोल्टेज वेवफॉर्म कैपेसिटर का इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस वेवफॉर्म. ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेजेंट का स्टेडी स्टेट हो गया. नाउ वी विल डिस्कस फॉर द पास्ट स्टेडी स्टेट दैट इज t is equals to 0 minus. So this is the past steady state. So past steady state में when we discuss, जैसे यहाँ पर we have considered कि dc 0 minus अभी तो करने we have considered 0 volt. अब ic 0 minus जो होगा it will be c d by dt of dc 0 minus, right? So अभी तो we have considered कि 0 volt, तो 0 का जो डेरिवेटिव है वो सिंपली 0 एम्पियर ही होगा, राइट? और अभी यहाँ पर कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी होता, यहाँ पर कुछ भी मतलब 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी होता तो उसका डेरिवेटिव भी 0 वोल्ट ही होता. तो ये स्टेडी स्टेट में हमेशा ही कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होता है वो 0 एम्पियर होता है. That's why the capacitor is always treated as an open circuit at the steady state. भले ही वो पास का steady state है, present का steady state है, but again same concept कि IC 0 minus is not equals to IC 0 plus. Capacitor never holds the current, right? And this is the reason why this capacitor current waveform is always a discontinuous waveform. Is always a discontinuous waveform. Just जैसे इंडक्टर में इंडक्टर का वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है, वैसे ही कैपेसिटर का करंट वेवफॉर्म इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस वेवफॉर्म बिकॉज IC 0 minus is always fixed at 0 ampere and IC 0 plus is not 0 ampere. ठीक है, ये इक्वल नहीं होगी मतलब कभी भी. ठीक है, तो if we write the transient equation for the capacitor current, so IC t will be IC infinite plus of IC 0 plus minus of IC infinite and then exponential raised to power minus of t upon tau. So IC infinite is 0, so simply IC 0 plus e raised to power minus of t upon tau, right? So for finding this IC 0 plus, draw the circuit at t is equals to 0 plus, right? Just inductor is replaced by the initial current source, so capacitor is replaced by the initial voltage source. तो ये इसका इनिशियल जो भी इसका वोल्टेज था ये रिप्लेस हो जाएगा इनिशियल वोल्टेज सोर्स से. तो वी हैव कंसिडर्ड द VC 0 माइनस एज 0 वोल्ट, सो सिंपली 0 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पर ये बेसिकली रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय द 0 वोल्ट एंड यहाँ पर दिस इज द इनपुट, right? And current flowing across this capacitor is this IC 0 plus. This is the circuit at t is equal to 0 plus. So this IC 0 plus is nothing but VI upon R, right? So this IC 0 plus is upon R. So इसके according जो so sorry, IC 0 plus is VI upon R. तो इसके according जो ट्रांजिएंट इक्वेशन जाएगा इसे e raised to power minus of t upon tau हो जाएगा, राइट? तो उसको भी we can graphically represent here. Where is it? This is the IC of t. So here we go to IC. So it will be IC 0 plus and e raised to power minus of t upon tau. So यहाँ पर ये basically IC 0 plus का वैल्यू है, राइट? This is which is VI upon R. और उसके बाद ये सिंपल इस तरह से डिस्चार्ज करेगा बिकॉज IC इनफाइनाइट इज फिक्स वैल्यू विच इज 0 एम्पियर. ठीक है, सो यहाँ पर इट विल बी टर्मिनेटिंग टू IC इनफाइनाइट विच इज 0 एम्पियर. और यहाँ पर IC 0 माइनस इज ऑल्सो फिक्स्ड दैट इज 0 एम्पियर. एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूटी बिकॉज 0 माइनस पर इट वॉज 0 एम्पियर और 0 प्लस पर इनिशियली इट हैज जम्प्ड टू a finite value that is VI upon R. So this is the discontinuity, right? And this is positive function as we can see first quadrant lag कर रहा है. So this is the waveform for the capacitor current. ठीक है, so I hope it is clear. अब ये तो गया basically charging का बात. अब let's discuss about the discharging. So second is
discharging of capacitor. So this is discharging means it's a source free network. We haven't provided the source to the network, so simply circuit जो है वो एक बेसिक सा RC सर्किट है जो विदाउट सोर्स के अवेलेबल है और यहाँ पर वी विल कंसिडर कि एक इनिशियल वोल्टेज इसके पास पहले से अवेलेबल है, लेट्स से वी नॉट वोल्ट्स, ये बेसिकली इसका इनिशियल वोल्टेज वी है कंसिडर। तो इस वोल्टेज से बेसिकली ये इस रेजिस्टर को डिस्चार्ज कर जाएगा, राइट। तो इसके जो VCT है कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। रेजिस्टर पे डिस्चार्ज करेगा ये तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ICT कैपेसिटर का जो करंट है C d/dt ऑफ VCT एक कैपेसिटर का वोल्टेज जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एक डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा एक नेगेटिव फंक्शन होता है, राइट। कोई भी अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ पर जैसे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का जो डेरिवेटिव है मतलब जो स्लोप है उसका स्लोप वो हमेशा एक नेगेटिव फंक्शन होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगा, तो इसलिए ICT वो एक नेगेटिव फंक्शन आता है इस बार। सो अब यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो ट्रांजिएंट इक्वेशन होगा वो किस तरह से होगा कि जो इसका जो इनिशियल वोल्टेज है C0 दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू VC0 प्लस, राइट। यही बेसिकली VC0 प्लस है, एंड VC इनफाइनाइट तो 0 वोल्ट हो ही जाएगा बिकॉज ये पूरी तरह से डिस्चार्ज कर जाएगा, तो VC इनफाइनाइट विल बी 0 वोल्ट, राइट। VC0 प्लस एंड e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ t अपॉन टाउ, ये बेसिकली इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा है। कैपेसिटर वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो इसका इस फॉर्म में होगा, राइट। और इसको वी कैन ड्रॉ दिस, but this is the VCT which is having its initial value that is the V0, और इसके बाद ये will be simply इस तरह से डिस्चार्ज करते हुए finally it will reach to 0, right. So this is a decreasing function. Now at t tending to infinite, right, यहाँ पर at t tending to infinite when it has reached to 0 volt, so this is the present steady state. तो अब यहाँ पर ठीक है, अभी तो वी हैव कंसीडर कि VC0 माइनस जो है वो 0 वोल्ट है, बट लेट्स से कि कुछ मिनिमम वैल्यू पे कर वो जाके सस्टेन कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो IC ऑफ इनफाइनाइट होगा विच विल बी इक्वल्स टू C d/dt ऑफ VC इनफाइनाइट, राइट। और VC इनफाइनाइट अभी के लिए तो ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड 0, तो d/dt ऑफ 0 दैट वाज 0 एम्पीयर, सो स्टेडी स्टेट पे ऑलवेज ओपन सर्किट, तो भले वो 0 वोल्ट तक मतलब अगर डिस्चार्ज कर रहा है या फिर मतलब ये तो स्टैंडर्ड डिस्चार्जिंग है कि 0 वोल्ट, बट जो नॉर्मल डिस्चार्जिंग होती है वो कभी भी 0 वोल्ट तक तो नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू सत्य कुछ है। तो मतलब जैसे यहाँ पर अगर कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू तक अगर वो डिस्चार्ज कर रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू ही होगा, राइट। और कॉन्स्टेंट का यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगा, तो कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव है इज ऑलवेज 0। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ही कैपेसिटर भले वो चार्ज कर रहा है या डिस्चार्ज कर रहा है, स्टेडी स्टेट पे हमेशा कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड वेदर इट इज चार्जिंग और वेदर इट इज डिस्चार्जिंग, राइट। तो दिस इज 0 एम्पीयर। अब ये अगेन वी विल डिस्कस अगेन अबाउट द पास्ट स्टेडी स्टेट, सो द t is equal to 0 minus which is the past steady state, right। अब यहाँ पर because VC 0 minus we have considered V naught volts, so यहाँ पर जो IC 0 minus होगा that will be equals to C d/dt of VC 0 minus, and VC 0 minus is V naught which is again a constant voltage, right? And constant voltage is always 0, that's why the capacitor is open circuit. Whether it is a past steady state or present steady state, it is always a fixed value, IC 0 minus and IC infinite. These two values are always fixed. IC 0 minus is always 0 ampere, IC infinite is always 0 ampere. These two values are fixed value, just as in the case of inductor की यहाँ पर VC 0 minus or VL 0 minus and VL infinite was 0 volt in the case of inductor. Just ये बेसिकली यहाँ पर कैपेसिटर में केस है कि IC 0 माइनस और IC इनफिनिट विल बी 0 वोल्ट ऑलवेज, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो कैपेसिटर का जो ट्रांजिएंट इक्वेशन हुआ वोल्टेज इक्वेशन, तो कैपेसिटर का ये VC 0 प्लस e टू पावर माइनस t अपॉन टाउ डिस्चार्जिंग के अंदर। सिमिलरली कैपेसिटर का जो करंट इक्वेशन C ऑफ t विल बी IC 0 plus e raised to power minus of t upon tau. Then again we will find this 0 plus IC 0 plus value by drawing the circuit at t is equal to 0 plus, and capacitor will be replaced by its initial voltage source.
राइट। और इनिशियल वोल्टेज सोर्स जो है वो बेसिकली वी नॉट वोल्ट है ना। तो इनिशियल वोल्टेज सोर्स पे रिप्लेस करेंगे तो सिंपली यहाँ पर ये रेजिस्टर हो गया एंड दिस विल बी रिप्लेस बाय द वोल्टेज सोर्स दैट इज वी नॉट एंड सोर्स तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है एंड द करंट फॉर इज दिस इज IC 0। अब ये IC 0 प्लस कितना है, this is 0 volt, so IC 0 plus is minus of V naught by right. यहाँ पर this is 0 plus I naught into our sorry IC, this is IC 0 plus into R plus of V naught equal to 0. So IC 0 plus we can see IC 0 plus जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा और नेगेटिव वैल्यू यहाँ था बिकॉज ये डिस्चार्जिंग में है तो नेगेटिव वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ V naught by R राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा यहाँ पर ये जो IC of t है will be equals to minus of V naught by R and e raised to power minus of t upon tau, right? So this is the equation and now let's draw these both waveforms together. तो वहाँ पर एक ही इसको बना लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ये तो बेसिकली करंट हो जाएगा कैपेसिटर का एंड वोल्टेज विल बी नेगेटिव, तो इस तरह से बनेगा यहाँ पर वोल्टेज सॉरी करंट विल बी नेगेटिव। सो यहाँ पर ये तो बेसिकली VC ऑफ टी हो गया राइट विच इज VC 0 plus and e raised to power minus of t upon tau, VC 0 plus is V naught। तो यहाँ पर ये जो इनिशियल इसका वोल्टेज था V naught उससे इस तरह से डिस्टेंस हो है, ठीक है। सो ये इसका वेवफॉर्म हो गया और सिमिलरली यहाँ पर हमने करंट का भी बनाऊंगा IC of t, तो V IC 0 plus and e raised to power minus of t upon tau, but IC 0 plus is negative which is having the value that is minus of V naught by R, तो के अकॉर्डिंग ये इस तरह से जाएंगे इस तरह से this is the minus of V naught upon R and यहाँ पर this is a 0 ampere and this is having the fixed value that is IC upon R is always 0 ampere and यहाँ पर also this should also be clear कि ये IC 0 minus जो है is also 0 ampere and this is the discontinuity, right? This is a discontinuous waveform and it is a negative function as we can see. So ये बेसिक वेवफॉर्म हो जाएगा इनका और this is the discussion of the charging and discharging of capacitor and the steady state behavior of capacitor, that why it is open circuit. So I hope it is clear and if you have any queries you can definitely ask in the comment section and feel free to ask in the comment section, okay? So okay, thank you.